nutrition and death. तो नाम का है के? नीलिमा। नीलिमा का? ओराम। नीलिमा ओराव। तो माँ बाप कहाँ है? गाढ़ा में। गाढ़ा में मतलब नाखे सिराला कानिया सिराला बागान बंद है एक बात में खाना बिना खाना से सिराला कि खाना बन रहे नहीं रहे এখন अगर भाई बहन कहाँ भाई बहन तो कितना भाई बहन रही तो नहीं जमा मर गया क्यों न खे कितना जन रही तो नहीं चार जन এখন তো একলা বাঁচলে तो कहाँ बाँचिसला तो नाम का है के बिशुन बिशन का भक्ता बिशन भक्ता घर के क्या है तोर दुई भाई हैं दुई भाई माँ बाबा कहाँ होला तुम मरले का नहीं मरला बीमारी होई के वो टाइम बागान खुला रहे कि बंद रहे बाप तो बागान बंद था मोरा मन बागान खुला रहे से गिर के मरले और बाबा बागान बंद होते रहे से गिर के मरलक का हुई रहे तो बाबा के अटक से बीमारी रहे बहुत दिन से की रहे पहले बीमारी रहे तब डॉक्टर देखा ले नहीं देखा ले तो का लागे लोग भक्ता बहुत ही भैंसुर है के हमर तो भैंसुर है के इछवा के तो नहीं देखी मैं देखो ना का नाम है तो वो नाम मुन्नी मुनी तो बुढ़ा है ना के वो भी मरलक वो भी मरला हां ये तो अप्रैल महीना 1 तारीख के तो वो जे मरला के तो कहानियां चलो थी मन के कहानियां देखो थी चला था कोनो हरत करके मिला थे नहीं मिला थे कभी मिला था तो खाते नहीं मिला था नहीं खाते हमारे यहाँ गार्डन का जो वर्कर है कर्मचारी उन लोग बहुत ही से बहुत मिनिमम 400 से 500 आदमी मर गया खाना नहीं पाया ट्रीटमेंट सही टाइम नहीं पाया उसके बावजूद पानी नहीं है हर चीज़ उसके बाद में देखा गया है हमारा कितने आदमी हैं हम बोल दे रहा है मर गया जो जैसे कि हमारा यहाँ है गोबरेल लाल उधर है डिम्बू नायक मंगरा मुंडा उसका बाद में महावीर भोक्ता कर्मी गोसाई उसका बाद में हमारा यहाँ बहुत सारे था उतना तो नाम बोल नहीं सकते हैं অর্ধেক লোক তো মারাই যাচ্ছে মানে এখানে এরকমও ফ্যামিলি আছে পুরো ফ্যামিলি শুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এরকম কয়েকটা ফ্যামিলি আছে এখানে প্রথম সব ওই জংলি কচু ঘাসের গোটা ফোটা কি সব হাবিজাবি এসব খেয়ে তো অসুস্থ হয়ে মারা গেলই খাওয়ার অভাবে ইসের অভাবে মানুষ তো মারা তো যাচ্ছেই আর তাছাড়াও মানে চুরি ডাকাতি তো শুরু হয়নি কিন্তু হলেও হতে পারে এখন বিচিত্র কিছু নেই এতে खाना तो है रोटी भात थोड़े थोड़े अब जे मिलत भर पेट कहाँ पारबू अब धाजी रखवा को नतर खाते रही कितना दिन होला कुछ जाला इसने होला कोई ये तो पुष महीना के 21 तारीख के खत्म होला अच्छा এখন কানিয়া চালাতে তো নি ঘর का लेके चली मत कोनो हिट खेनी पारन कोनो बर चाल खेनी पारो ना छोटे बड़ छुआ कोनो तरानेल कमाई गेल खाइला नीलाने कहाँ से खाब बिना खाए के भी दिन गुजराला हाँ तो মূলত দেখা গেছে যে এই 22টা বাগানে বন্ধ হওয়ার পর থেকে যতদিন অবধি সরকারি সহায়তা পাননি বা অন্য কোথাও কাজে যেতে পারেননি ততদিন অবধি প্রত্যেকটা বাগানেই প্রায় 150 থেকে 200 অ্যাভারেজ তার বেশি হবে কোথাও মানুষ মারা গেছেন স্পেশালি বাচ্চা বুড়ো এবং মহিলা এদের অবস্থাটা সবচেয়ে খারাপ থেকেছে তো গভর্নমেন্ট তো স্বীকার করতে রাজি নয় যে স্টারভেশন ডেথ তারা তো চান যে ডক্টরস রিপোর্ট কি বলছে ডক্টররা তো কখনো বলবেন না যে ওটা স্টারভেশন ডেথ তারা বলবেনই যে ও কজ অফ ডেথ হার্ট অ্যাটাক অর যেটাই হয় Now what happens when someone is malnourished when someone is lived with such low weights the body adapts itself to low intakes of food and when the body adapts itself cells have shrunk already a body has shrunk the cells have shrunk so
the line between the severe malnutrition, which is called chronic energy deficiency grade 3, and death is very small. Now, such a person, if such a person starves for another 4 or 5 days, they are likely to die. What is it now we will find on forensic examination? Absolutely nothing. Now, it is true that just before dying, all the systems give way, in the sense the gastrointestinal, the kidneys, the heart. So the doctor will write it's heart failure. But every death is heart failure. It's a heart that has to fail. So there isn't any dramatic thing that you will see. And therefore we must now take it back to where it belongs. Back to the villages, back into the homes, and then investigate there. And it's not very difficult. I think in our villages we still have a sense of community where people will tell you, look, this family has been starving. So we must accept that. When a family starves, of course they are desperate. There are things that they will do which so-called normal families will not do. They migrate in large numbers. They eat foods which are very unusual, foods that are not normally eaten by you and me. They will beg. They will sell all their household goods, etc., etc. I mean, you could look at, and this should be the way of classifying hunger and not use a medical model for hunger. उसको आगे व्यवस्था नहीं बन पाई, उसकी डॉक्टर के पास भेजा तो कैसे भेजा, पैसा नहीं है हमारे पास में, पैसे होते समय पे तो उसको ले जाते बच्ची को, इसलिए बच्चे दोनों खत्म हो गए, दोनों बच्ची हमारे 2 साल हो गए, कुछ मजदूरी मिला ना रोजगार मिला, कुछ नहीं मिला गाँव में हो रहा है। तो कैसे का गुजारा कर रहे हैं? गुजारा कर रहे हैं मजदूरी के, कहीं कहीं जाते हैं इधर उधर, घर छोड़कर बाहर चले जाते हैं, गेहूँ काटने चले जाते हैं, इसलिए गुजारा कर रहे हैं। और जो हमारा ही कॉलोनी है वो भी काम नहीं है, कोर्ट का वो भी काम नहीं दिया, जाना क्या है, हमसे नाराज हुई सरकार। Meet Shantabai Shinde. She is the widow of Bala Shinde, who once worked in Century Textile Mill, Mumbai, and lost his job a couple of years ago. Today, she bravely faces life, making envelopes to earn her daily bread. सब घर में बर्तन बर्तन सब दिया, कौन किधर पैसा मांगेगा, छोकरी पर मर गया, दवा का पैसा नहीं क्या करेगा, छोकरा मर गया 18 बरस का, खाने पीने का हालत हो गया, बीमार पड़ गया, पैसा नहीं, वो मेरा कैसा उतन कैसा हो गया, नवरा गुजर गया, टेंशन लिया ना, ऐसा कैसा हो गया, 2-2, 4-4 बजे खाना नहीं मिलता रात को, ऐसा तड़पड़ सब लोग क्या करेगा, टेंशन है, हार्ट अटैक आया, मर गया, मरने के बाद भी पैसा नहीं, कौन देने वाला। The most dramatic development in recent times has been the phenomenal increase in India's defense budget. Since the Kargil War in 1999, India has more than doubled its defense budget. After China, it is the largest purchaser of arms in the world. India is becoming a global power. India is becoming a global power. India is becoming a global power, not because the United States is making it one, but because India is a democracy that is emerging to take on global responsibilities. It has the population, the reach, the increasing economic clout to do that, but the United States wants to be supportive. As this global power marches ahead, most of its citizens are being left behind. In times of high-tech corporate farming, these vast numbers still depend on a low-tech, no-nutrition diet. Gourmet cuisine may be the new passion of the visible Indian. Getting edible food to satiate the nagging feeling of hunger is the full-time job of millions of its invisible citizens. And many a times they do not fully succeed. Hunger does not distinguish between the poisonous and the palatable. Gruel from mango kernels regularly causes death.
One more life extinguished. Still, life goes on. There is no choice except embracing death. It is just a matter of time. All are ready, waiting for their turns. The point is that the efforts of some 40 years after independence have been completely wiped out in the last decade. In fact, the last 14 years, I would say, of neoliberal economic reforms. Today, we are back to a per capita availability of only 155 kilograms. So if you take an average family of 4 members, that means that almost 100 kilograms less per annum is being absorbed by an average family in India today, which is a phenomenal drop. If you make international comparisons, today we have the lowest per capita food grains availability outside sub-Saharan Africa and some least developed countries. Whatever the media may want us to believe, most Indians still live in the villages and depend entirely on agriculture. And what is the state of agriculture that contributes 26% to our national GDP and provides employment to 58% of our vast population? If you look at the absolute amount which is being spent, which was spent last year under the UPA government, it was a mere 15,000 crores of rupees on rural development, which includes agriculture and rural development, irrigation and flood control, village and small scale industry. Now 15,000 crores of rupees was being spent 18 years ago during just after the drought of 1987. So it's a phenomenal drop. It's an absolute cut, leave alone a relative cut. And every 100 rupees that the government spends less on development means, because of the operation of reverse multiplier effects, that incomes go down by 400 to 500 rupees, unemployment rises. So that is what has produced the crisis of rising unemployment, falling incomes and falling purchasing power, particularly in rural India. This shrinking of purchasing power is responsible for the drop in food grain consumption. In plain words, a vast number of invisible Indians do not have the money to buy food that they grow. As people lose their purchasing power, they are unable to buy grain from the public distribution system, popularly called PDS. In the decade following the implementation of the new economic policy, the sale of food grains in the Russian shops halved. And what was the state's response? People don't seem to need the food grains any longer, so let us restrict food subsidy to those living below the poverty line. Public distribution system is the biggest system in this country to provide food security to millions of people. It has reached almost every small village. It functions in every small village and therefore is accessible to everyone. And amongst the food security schemes, therefore, this is one of the important and vital system which unfortunately the government is planning to dismantle. Why are we saying that is because the actions of the government in central as well as Maharashtra state speak for itself. First it was that PDS offered substantial food grains to